Hi friends, welcome back to CivTech Simplified. This is Engineer Imran Aziz. सर्वेइंग एंड लेवलिंग एसएससी जेई में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 19 और इस वीडियो में हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 181 टू 190। आई होप सो फार आपने सर्वेइंग एंड लेवलिंग में अपनी लर्निंग डेवलप की होगी। आज के टॉपिक में हम मोस्टली कंटूरिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट मेथड्स और इसके डिफरेंट मेजरमेंट्स के तरीके। सो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब, जहां पे हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मुकम्मल एंड तक देखें और इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी में जरूर शेयर करें। सर्वेइंग फॉर एसएससी जेई में पार्ट 19 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज 181 टू 190। क्वेश्चन नंबर 181 says that the contour interval of any survey is inversely proportional to the scale of map. Option A is agree, option B is disagree. So A is the correct option, which is agree. Yes, contour interval किसी भी सर्वे का मैप के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कंटूर इंटरवल कम होगा, इट मींस आपका मैप उतना ही बड़े स्केल का है। सो अकॉर्डिंगली A is the correct option. The contour interval dash throughout the survey, option A, should be constant. Option B, need not to be constant. Yes, it should be constant. So A is the correct option. 183. The contour lines can cross one another on map only in case of option A, vertical cliff, option B, valley, option C, a ridge, option D, an overhanging cliff. So overhanging cliff is the correct option. Contour lines can cross one another on map only in case of an overhanging cliff. So D is the correct option. 184. When several contours coincides, it indicates option A, vertical cliff, option B, a valley, option C, a ridge, option D, a saddle. So A is the correct option. It's vertical cliff. जब बहुत से कंटूर्स मिलते हैं किसी पॉइंट के ऊपर हिटिंग की, तो ये शो करता है कि यहाँ पे एक वर्टिकल क्लिफ है। 185. Which of the following statement is wrong? Option A, a series of closed contour lines on map indicates a depression if the higher values are inside. Option B, a series of closed contour lines on a plane indicates a hill if the higher values are outside. Option C, the uniformly spaced contour lines indicate a plane surface. Option D, all of the above. So ये तमाम जो है वो wrong है, इनका जो इनवर्स है या अदरवाइज है वो करेक्ट होता है। So D is the correct option. 186. Contour line cross ridge or valley lines at option A 30 degree, option B 45 degree, option D 60 degree, and option D is 9. So contour lines cross ridge or valley line at 90 degree. D is the correct option for this question. 187. The points on a contour gradient will have the same elevation. Option A true, option B is false. So B is the correct option. It's false. Points on a contour gradient will not be having the same elevation. 188. The reduced level of a point on ground is called option A spot level, option B spot height, option C A and B, either A or B, option D none of these. So either A or B is the correct option, which is option C. The reduced level of a point on ground is called spot level or spot height. 189. In routine survey, the most suitable method of contouring is option A by squares, option B by radial lines, option C by cross section, option D by tachometer. So C is the correct option. It's cross sections. 190. The tachometer method of contouring is particularly suitable for option A, when a contoured map of hill is required, option B, when the area is not very extensive, option C, in surveys of road or railways, option D, all of these. So A is the correct option. When contoured map of hill is required, then tachometer method of contouring is. So A is the correct option for this question. So friends, this was part 19 of our ongoing video series on surveying and leveling MCQs for SSC JE. I hope आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे फर्दर 10 MCQs आपके साथ शेयर करते हुए हम 200 MCQs को कंप्लीट करेंगे। So let's meet again in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Thank you very much and have a good day.